Have you noticed that some of the teenagers suddenly spend very less time with their parents? They stay in their rooms and give one word answers and they talk their friends instead. They are doing this because they are worried about being judged, criticized, and misunderstood. It is a sign that the teen is learning to navigate their independence with the love and respect of their parents. Parenting a teenager can be challenging, but it can be very smooth and lovable with the tricks which I will give you today, the 10 main tricks, and you can build a very beautiful relation with your child. So let's start the video. Trick 1: listen before you advise. Always listen your child very patiently. Imagine आपका टीनेज घर पे आया है और उसने बोला आई हैव फेल्ड इन माई मैथ्स टेस्ट एंड मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स विल ऑटोमेटिकली जम्प कि I told you, you spent all your day on your mobile, that's why you have failed. Instead of saying this, you can say, you are looking very disappointed. This time you have done this. Next time we will follow the new approach. So that जब बच्चे को ये लगेगा कि उसकी बात को सुना जा रहा है, समझा जा रहा है, तो वो आपकी एडवाइस को भी एक्सेप्ट करेगा. Trick 2: choose correction over constant correction. If you will always talk with your child about the mistakes and grades and chores, तो आपका बच्चा आपसे बात करना ही बंद कर देगा. अगर आपको उसको constantly बोलेंगे, did you finish your homework? Why your room is so messy? तो ऐसी बातों से बच्चे कॉन्वर्सेशन को स्टॉप करना ही बेटर समझते हैं. इंस्टेड ऑफ दिस, ऑलवेज स्पेंड 5 to 10 minutes क्वालिटी टाइम विद योर चाइल्ड. Ask your child about the school. How was the day spent in the school? 3. Respect their growing independence. Give them each appropriate choices and responsibilities. अगर आपका बच्चा 15 years का है और आप उसको बोल रहे हो कि उसने आपकी चॉइस के कपड़े पहनने हैं, तो वो आपसे फ्रस्ट्रेट होएगा. डेफिनेटली नेचुरली वो आपको लाइक नहीं करेगा उस टाइम पे, बिकॉज उसको उस एज पे इंडिपेंडेंस चाहिए. तो आप उसको चॉइस के लिए इंडिपेंडेंस दे कि वो अपनी चॉइस के अपने कलर्स के कपड़े पहन सके, बट मेक श्योर देयर शुड बी द बाउंड्रीज. इट शुड बी एप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द ओकेजन्स. Trick 4: stay calm during the conflict. If your child is coming late to the home, you don't have to start the conflict and saying anything to your child. Rather, you can say that I am feeling relaxed, you are safe at home, and we will talk about so that this thing would not happen the next time, so that the child will automatically learn about the boundaries here. Trick 5: spend quality time together. You don't need the grand plans. Just plan a movie together, going for a walk, drive together, or you just can have or make a dish together. देखिए, always studies को लेके, examination को लेके आपको टाइम एक साथ स्पेंड नहीं करना है. अदर एक्टिविटीज भी आप स्पेंड कर सकते हो, so that your child can create a very beautiful bond with you. Trick 6: set clear and consistent boundaries. Rules are important, but tell them, explain them the reason behind it. So consistency feels the teens very secure even if they don't want to follow it. Instead of saying this, stop watching your mobile after 10 p.m. You can say that sleeping is more important for your health, for your mood and concentration. So always keep your mobile outside your room in the parking lot after the 10 p.m. जब आप बच्चे को ऐसे एक्सप्लेन करेंगे तो वो आपकी एडवाइस को फॉलो करना स्टार्ट करेगा. Trick 7: praise efforts, not just results. If your child is showing the responsibility and the kindness to you, always encourage that, ताकि आपका बच्चा दोबारा से उस चीज को करना स्टार्ट करे. It be the behavior you want to see. Teenagers learn by watching and observing. So always show them respect, love and the healthy ways to tackle the stress. Just imagine, अगर आपके बच्चे के मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, instead of saying that you have not performed well in your exam, you can say that I am proud of you. You have done your 100%, but next time we will follow the new approach so that it would be better in the next time. तो इससे बच्चे को एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, वो स्ट्रेस को कैसे लेता है अपने पेरेंट्स से सीखता है. ट्रिक 9: कीप द डोर्स ओपन. ऑलवेज इंश्योर योर चाइल्ड कि आप उसके लिए हमेशा अवेलेबल हो. जब आप ऐसा बोलोगे तो आपका बच्चा आपके साथ अपनी सारी बात शेयर कर पाएगा. जस्ट एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है, यू कैन से दैट आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड, दैट्स वाई आई वॉज एंग्री एट यू, आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम आई विल टेक केयर ऑफ दिस थिंग. जैसे ही आप अपनी गलती को एडमिट करते हैं तो आपका बच्चा भी ये चीज सीखता है कि उसको भी अगर उससे कोई गलती हुई है तो वो उस चीज को एडमिट करके आपके पास आए.
ट्रिक 10, आस्क फॉर द हेल्प व्हेन नीडेड। जब भी आपको लगता है आपके बच्चे में ये सारी ट्रिक्स को फॉलो करने के बाद भी कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है, वो एंशियस है, डिस्टर्ब्ड है, डिप्रेशन में है, अकेला बैठा रहना ज़्यादा लाइक करता है, तो आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएं और always ask for the help to the doctor. Teenagers don't expect the perfect parents. They want the parents who are always available for them. Give them respect and love. Every calm conversation and every efforts to understand your child strengthen your bond with your child. Trust isn't built overnight. It takes the everyday efforts. So you have to interact with your child on the daily basis ताकि आपके बच्चा आपके साथ पूरी अपने दिल की बात खुल के कर पाए. If you have liked this video, give it a thumbs up and share it with other parents also. And write me in the comment below, what is the sentence, what is the word which you still have remember told by your parents, better or worse, whatever. See you in the next video. Till then, bye bye.